Hello class 9. In the last video we have started the French Revolution. Now let's have a quick recap. That in France you have read the monarch rule of Louis XVI, and problems faced by the third estate people, especially the food shortage as well as the tax liabilities on them. And then in order to increase the taxes, Louis XVI called the meeting of Estate General, in which third estate people demanded for the new voting principle, that was each member one vote. And when the king rejected that proposal, third estate themselves formed the National Assembly. उन्होंने अपने आप को खुद ही नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. They represented themselves as the spokesmen of the France and decided to form the constitution. On the other hand, third estate revolted for the food shortage, and when the king saw the revolt from all the sides, he accepted the National Assembly. And after getting recognition, the National Assembly passed three laws. They abolished the feudal dues, they abolished the tithes, and land under the church was also confiscated. And France becomes the constitutional monarchy. और अब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ इट बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. So France becomes a constitutional monarchy, and the system of constitutional monarchy can be understood with the help of this flow diagram. This was the political system under the Constitution of 1791. This we will read from the bottom. That for the political system, the population of France was divided into two parts: active citizens and passive citizens. Active citizens were those who were entitled to vote, and they were about 4 million in the total population of 28 million. And passive citizens, those who were not having any voting rights, they were about 3 million men, all women and children, and youth below 25 years. So criteria for dividing the population into active and passive citizen was that active citizens would be only men who are above the age of 25 and they are paying taxes equal to 3 days of laborer's wage will be granted voting rights, and they were about 4 million in total population. And passive citizens were all women, remaining men who were about 3 million who were not paying any kind of taxes will not be granted any voting rights, and they were about 24 million in total. And to qualify as elector, the person must belong to highest bracket of taxpayer. So let's read the flow chart again. Now active citizens can vote for the electors. Electors means those who are paying more taxes, and further electors will vote for the National Assembly. National Assembly would comprise of 745 members, and this assembly will become the legislatures of the country. Legislatures means ministers or the law making body who will make laws for the country. And the laws made by the legislatures will be implemented or executed by the king with the help of his ministers. So legislatures will control the king as well as his ministers, but king will have the veto power. Veto power means king has the power to reject the laws made by the National Assembly. Active citizens can also vote to elect the judiciary or the judges, so that if there is any conflict between the executive or the legislature or the active citizen, then it will be resolved by the judiciary. So this was the system or the political system of France of 1791, in which the objective was to limit the powers of the monarch or to avoid the concentration of power in one hand, and that's why they divided the power among three organs of government, that were judiciary, executive and the legislature. So Constitution of 1791 began with the Declaration of Rights of Men and Citizen, under which some rights were given to the citizens, like right to life, freedom of speech, freedom of opinion and equality before law. All these rights were considered as natural rights or inalienable rights, means these are the natural or basic rights should be granted to each human being and could not be taken away by anyone. And state has the duty to protect these natural rights should not be taken away from the human being.
When the constitution of 1791 was made, majority of the population of France was illiterate. So in order to explain the rights, they made the images or the symbols. The symbol of broken chain was made in order to reflect the act of freedom or the right of freedom. The symbol of bundle of rods reflected the strength lies in unity. One rod can easily be broken. Earlier, the society was divided into three sections and there was a divide and rule. This was the message for this symbol. The eye within a triangle radiating light stands for knowledge. Scepter symbolizes the royal power. Snake biting its own tail to form a ring. It is the symbol of eternity, that rights are forever and long lasting. These would never be taken away from them. And the symbol of red Phrygian cap, the cap worn by the slave upon becoming free. So, this symbol also reflects the act of freedom. The symbol of law tablet reflects that law is same for all. There is equality before law. Now, France abolishes monarchy and becomes republic. मीन्स कि फ्रांस ने अब मोनार्की को भी अबॉलिश कर दिया और वो रिपब्लिक बन गया। कैसे? अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के अंडर लुइस 16 बिल्कुल पावरलेस किंग रह गया था। ही वॉज मेयर एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द नेशनल असेंबली। तो उसने एक सीक्रेट नेगोशिएशन की, एक कॉन्स्पिरेसी की विद द किंग ऑफ पर्शिया, and rulers of neighboring kings were also worried about the developments that were taking place in the France. उन्होंने भी वहाँ पर प्लान्स बनाने शुरू कर दिए टू सेंड ट्रूप इन ऑर्डर टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द फ्रांस, क्योंकि उनको भी इस बात की टेंशन थी नेबरिंग किंग्स को कि जैसे फ्रांस में अब मोनार्क की कोई वैल्यू नहीं रही, तो वैसा ही सेम कल्चर जो है वो उनकी कंट्री में भी आ सकता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए वो अपनी ट्रूप जो है वो फ्रांस में भेजेंगे। अब जहाँ नेबरिंग किंग्स प्लान कर रहे थे टू सेंड ट्रूप्स इन ऑर्डर टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैपेंड इन फ्रांस, दूसरी तरफ नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में असेंबली में वोट किया फॉर द डेक्लरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। Thousands of volunteers joined the army, and when they marched into the Paris, they sang the patriotic song first time, which was composed by the Roger de Isle, and that song was named as Marseillaise. The song was started from the place called Marseilles, that's why it is named as Marseillaise, and now it became the national anthem of France. Now, economic difficulties. रेवोल्यूशनरी वॉर मीन्स इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी। जब भी किसी कंट्री में वॉर होती है तो इसका मतलब क्या है कि मनी की प्रॉब्लम होगी, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमें बेसिक फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, फूड की प्रॉब्लम होगी, तो वो हमें फेस करनी पड़ेगी। तो वैसे ही फ्रांस में भी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आई। मैन वर फाइटिंग एट द वॉर फ्रंट एंड वुमेन वर हैविंग टास्क ऑफ अर्निंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर बिग फैमिलीज। अब क्योंकि मैन जो थे वो वॉर पे चले गए थे तो वुमेन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अर्निंग की भी और प्लस अपनी फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए भी। लेकिन वो इन रेवोल्यूशनरी वॉर से बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड थे। बहुत सारे ऐसे पैसिव सिटीजन्स थे जिनको लगता था कि ये वॉर्स होनी ही चाहिए। और उसका दूसरा रीज़न ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने वोटिंग राइट्स सिर्फ रिच क्लास को दिए। जैसे आपने पढ़ा था कि दे गेव वोटिंग राइट्स टू एक्टिव सिटीजन्स ओनली। और एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? दोज हु वर पेइंग टैक्सेस इक्वल टू 3 डे वेजेस, मीन्स वो कुछ ना कुछ तो उनके पास मनी थी, वो रिच थे, यानी कि उन्होंने वोटिंग राइट्स पुअर्स को नहीं दिए, दे गेव दी वोटिंग राइट्स टू रिच ओनली। तो जब वोटिंग राइट्स रिच को मिले और पुअर को नहीं मिले तो जितने भी पैसिव सिटीजन्स थे दे ओपनड देयर पॉलिटिकल क्लब्स एंड स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट द पॉलिटिकल राइट्स टू बी गिवन टू देम, कि अब उनको पॉलिटिकल राइट्स कैसे मिले। अब वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे और उन क्लब्स में से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था एक जैकोबिन क्लब।
and women too also formed so many clubs. Now, Jacobin Club. अब जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, दे वर बिलोंगिंग टू लेस प्रॉस्परस और वी कैन से पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लाइक शॉपकीपर, डेली वेज अर्नर्स, वॉच मेकर। तो जो छोटा छोटा काम करते थे, आर्टिसंस, वो सारे के सारे जो थे वो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे। एंड देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। उन्होंने अपने क्लब के मेंबर्स के लिए एक ड्रेस कोड भी फिक्स कर दिया, दैट वाज लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, जो कि नॉर्मली डॉक वर्कर्स पहनते थे। डॉक वर्कर्स मीन्स जो पोर्ट पे काम करते हैं उनको बोलते हैं डॉक वर्कर्स। तो उन्होंने अपना एक ड्रेस कोड बना लिया जो कि नॉर्मली एक पुअर्स की ड्रेस थी, और वो इसलिए बनाई थी क्योंकि वो अपने आप को फैशनेबल सोसाइटी, जो नॉबल्स थे जो कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, उनसे डिस्टिंग्विश लगने के लिए दे स्टार्टेड वेयरिंग दी लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स। और नॉर्मली जो नॉबल्स थे वो क्या पहनते थे? दे वर दी वेयरर्स ऑफ नी ब्रीचेस, नी लेंथ एक कैप्री पहनते थे। तो इसलिए अपने आप को फैशनेबल सोसाइटी नॉबल से अलग दिखने के लिए उन्होंने अपना ड्रेस कोड बना लिया, एंड दे वर नोन एज दी सैंस कलोटीज, दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो उनको लोगों ने सैंस कलोटीज कहना शुरू कर दिया। इन एडिशन टू लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर दे ऑल्सो वोर दी रेड कैप विच वॉज द सिंबल ऑफ लिबर्टी। तो इस तरह का काम जो था वो जैकोबिन क्लब ने करना शुरू कर दिया। वुमेन ने भी क्लब फॉर्म किए थे, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी करने की परमिशन नहीं थी। नाउ जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन।